I don't understand why what you are asking. So since P block is a quite big chapter, is it advisable to start studying that now? So you're asking for P block elements. No, I won't advise studying P block since वो आपके syllabus में भी नहीं था, right? It was not there in your 12th standard syllabus. So जो basic ideas है ना, आप लेकिन PYQs कीजिए, थ्योरी आप मत पढ़िए, whatever you know ना, जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको पता रहती है लेकिन सवाल इस तरह से आया रहता है कि आपको आंसर नहीं पता, मतलब you don't know how to approach the questions. So I would suggest that there are few things which you can answer from chemical bonding and periodic properties. कहाँ पे? P block elements. हाँ, reactions अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, ठीक है, if there are some reactions, तो जो हमने आपको दिया है कुछ नोट्स हैं, कुछ रिएक्शंस, उनको देख लीजिए एक बार एंड दैट इज इट, बिकॉज अगेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यू हैव बेटर स्पेंड इट इन दोस क्वेश्चन, दोस टॉपिक्स, दोस चैप्टर्स जहाँ पे आपने तैयारी की हुई है, जहाँ जो आपके सिलेबस में 12th में था, एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न द थ्योरी फॉर दैट, यू डोंट हैव एनी डाउट्स इन द थ्योरी. अच्छा, दूसरी चीज व्हाट आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ इज दैट इन द मेन ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जेईई इज आस्किंग राइट नाउ, आप कितना ऑर्डर पूछेंगे, है ना. एक तो पहले पता था कि ऑर्डर वो तभी पूछते थे जब कोई एक्सेप्शन होता था, ठीक है, एंड एक्सेप्शन हैज अ लिमिट. अब उनको 20 पेपर बनाने हैं, है ना, एंड ऑल ऑफ दोस 20 पेपर्स शुड बी ऑफ कंपैरेटिव डिफिकल्टी. अब उस कंपैरेटिव डिफिकल्टी के लिए सेम सवाल तो नहीं दे देंगे, सो दे आर नाउ आस्किंग क्वेश्चंस आर ऑन रिएक्शंस, बिकॉज रिएक्शंस ही हैं जो बहुत ज्यादा है, एंड दे कैन आस्क क्वेश्चंस ओनली ऑन रिएक्शन बिकॉज 20 पेपर बनाने होंगे, ठीक है. सो आई एम नॉट सेइंग कि ऑर्डर वाला अब सवाल आता ही नहीं है, बट इट हैज बिकम वेरी फ्यू राइट नाउ. ऑर्डर वाले जो भी सवाल होते थे वो नहीं मतलब अब नहीं उतना आता जितना पहले आता, बिकॉज इनिशियली दे यूज्ड टू गिव ओनली द क्वेश्चंस ऑन द ऑर्डर फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड केमिकल बॉन्डिंग आल्सो, वहां भी बहुत सारे ऑर्डर के सवाल आते थे, बट आई एम सीइंग दैट वेरी लेस these days. ठीक है, सो माय सजेशन इज दैट आप थ्योरी नहीं पढ़िए लेकिन पीवाईक्यू जरूर कीजिएगा, बिकॉज इफ यू डू पीवाईक्यूज यू विल सी दैट ओके फाइन, दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन which can be made, है ना, एंड इट इज हैज रिलेशन विद केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, तो उस तरह के सवाल जरूर कीजिए. Yes, okay, my friend. That is yes, you are correct. Very good. Waiting for you, Hamza. Okay. Yes, Hamza, correct. Very good. So this is going to be C because एक आपका यहाँ पे NO2 बन सकता है, which will be coordinating with the nitrogen atom, और एक आपका बन सकता है ONO, which will be coordinating with the oxygen atom, है ना. So these are the two isomers which can be made. क्या नाम होता है ऐसे isomers को क्या बोलते हैं? What type of isomers are these? जोर से बोलिए जरा. What, Priya? Those are linkage isomers. These are linkage isomers because one is linking with nitrogen, the other is linking with oxygen. Let's see some of the questions. This one question is from splitting of d orbitals. I'm looking for the question.
Yes, मैं तो correct है. Yes, the correct way go. I think the same, so it is down. Okay. They have asked one question regarding the chirality. Okay, please read this question. Which of them is chiral? आपको ये सवाल, I mean, you can get it directly from NCERT also. I think it is present in NCERT, if I can remember correctly. Yes, Marita, I think that is correct. CRP class 12, first book, last chapter. Okay, fine. It is not exactly platinum, but cobalt का complex है, but the ligands are same here, है ना? Ligands same है, and it is present in NCERT itself. The cis form of PTCl2 whole twice, it is going to be chiral in nature. Okay, the cis form, not the trans form. Transform नहीं होगा, कौन सा form होगा? Cis form is going to be chiral in nature. We'll have platinum here. ठीक है, that is two chlorine and chlorine. अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा. This is a coordination number will be 6 because EN is a bidentate ligand which is having two bonds. हाँ, two bonds होते, two bonded bonds. एक EN में दो बॉन्ड, दो EN में चार बॉन्ड प्लस दो क्लोरीन, दैट इज इक्वल टू 6. तो प्लीज इसको ऐसा मत समझिएगा दैट इट इज अ स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे चार लिगेंड्स है.
has only 4 ligands, but one of the ligand is bidentate. So here you will have, and this will be En, and this will be En. Okay, the mirror image of this is not going to be what? अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? It is because, let me show you the actual thing. When I make octahedral, it is not a very justified way to make octahedral in one plane. I have to show this in one plane, and then I have to show that this are inside the plane. This is coming outside the plane. Here we have inside the plane, and this is coming outside the plane. Okay. Now, chlorine and chlorine आपने एक जगह रख लिया. After that, you have the ENs. So En, that means a bidentate ligand can have only an angle of 90 degree. 180 degree में कोई भी bidentate ligand नहीं bond बना सकता है, not that large. So you'll have En here, like this, and you will have En here, like this. So inside the plane bhi hai, and then it is coming out. I mean, it is coming on the plane, and this is outside the plane and it is going inside. That is why there is chirality in this particular complex, which is having coordination number 6 octahedral complex. Okay, so this is the complex which is having. And देखिए, all of these things are in your NCERT itself. This NCERT में ये दिया हुआ है. NCERT में बस ये था कि it was for cobalt, not for platinum. ठीक है, same complex. There's one question which is regarding potassium ferrocyanide. इसको लिख लीजिए. This is another thing, not related directly with isomers, but इस सवाल को लिख लीजिए जरा. ठीक है, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड में if you are going to add Fe3 plus के cations है ना, it gives a Prussian blue color precipitate on the addition of potassium ferrocyanide on Fe3 positive. तो actually होता क्या है? We here have Fe3 positive cations, ठीक है, and then we have FeCN6. FeCN6 has a charge of -4. That means यहाँ पे Fe जो है that is 2 positive. ठीक है, this is 2 positive. When these react, एक stable complex बनता है जिसमें counter ion is also iron. आपको मिलेगा Fe4 FeCN6. ठीक है, so this is having the Prussian blue color. There is another good question with reactivity जो आपको याद रहना चाहिए. Try this one. The correct formula of the compound which gives white precipitate with BaCl2 but not with AgNO3 कौन सा होगा वो? Yes, Marita, very good, correct. ये वर्नर थ्योरी से है ना? वर्नर थ्योरी में वर्नर used AgNO3 and then there are some reactions on BaSO4, मतलब BaCl2 वाला भी. ठीक है, so please remember BaCl2
if it will react with anything which is having SO4 2 negative, then Cl will be replaced by SO4 and you will get BaSO4. Now this BaSO4, it is going to be white PPT. That means if you want a white color from BaCl2, then what should be there? The complex should have SO4 2 negative as counter ion. ठीक है, एक को दो से मतलब नहीं है, काउंटर आयन में कौन होना चाहिए? इट शुड बी SO4 2 नेगेटिव. नाउ अगर आपको AgNO3 है, टेल मी AgNO3 किसके साथ रिएक्ट करके व्हाइट पीपीटी देगा? हाँ गाइस, AgNO3 will react with Cl negative. ठीक है, and it will give AgCl, which will be white precipitate. That means अगर AgNO3 के साथ चाहिए आपको, तो complex should have Cl minus as counter ion. ठीक है, इस केस में हमारे पास what do we need? We need SO4 2 negative as counter ion, because किसके साथ देना है? BaCl2 के साथ देना चाहिए, AgNO3 के साथ नहीं देना चाहिए. That means you will have option number A. Try this question, that is also from miscellaneous. Let me help you if you don't know this. We have EG level and we have the T2G level. And here we have the Berry center, है ना? ये आपका Berry center है. Now the distance from here to here, अगर Berry center को हम 0 मानेंगे, distance from Berry center to EG, this is going to be plus 0.6. And if you go below to the T2G level, then this is minus 0.4. This is minus 0.4 del O, है ना? ये भी del O है. This is also del O. Now CFSC, it is equal to, first of all हम देखेंगे किसको? T2G को. T2G में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन? Because T2G comes first. तो क्या -4, sorry -4 नहीं, -0.4 into the electrons in T2G. ठीक है, T2G का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो आ जाएगा प्लस. अब आपको क्या देखना है? आपको देखना है EG में. आपको क्या देखना है? EG में. तो 0.6 into whatever the electrons are present in EG. ठीक है, this is the formula for CFSE. 0.4 into T2G और 0.6 into EG. जैसे मान लीजिए T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे आ गया आपके पास -0.4 into 3, और EG में 0 इलेक्ट्रॉन्स है, तो माइनस में आ जाएगा आंसर. And there is also one term that you can add, plus P, because pairing energy को भी कंसीडर करना रहता है, तो कभी कभी आपको प्लस P देखिएगा, नहीं तो नहीं भी देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. ठीक है, so this is one equation. And then you have the magnetic moment, है ना? तो magnetic moment का क्या फॉर्मूला होता है? mu is equal to n into
n+2 का रूट। Now looking at the configuration -0.8 del O, आपको ये पता करना पड़ेगा कि how many electrons are there in T2G and how many electrons are there in EG। ठीक है, तो ट्राई कीजिए आप। Obviously एक चीज आपको यहाँ पे नजर आती होगी that it is minus, that means T2G has more electrons, right? T2G में क्या हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दिस पार्ट की वजह से नेगेटिव आंसर आ रहा है। ऑब्वियसली EG में क्या होगा, मैंने पास also they are saying one more thing, that is it is aqua complex। ठीक है, क्या कॉम्प्लेक्स है ये, aqua complex है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नो मरिता, मरिता प्लीज इसमें जैसे ये वेनेडियम 3 पॉजिटिव है ना, so how many electrons will be there, unknown electrons को T2G और EG levels में रख के देखिए and then see whether it is coming out to be -0.8 yes or no। ठीक है, तो वेनेडियम आपका कितना होता है, 23 होता है, वेनेडियम इज 23। 23 में से आपने क्या निकाल दिया, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, राइट? सो इट विल बी नाउ D2 कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका, राइट? ठीक है, D2 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, दैट मींस D2 कॉन्फ़िगरेशन ये तो आपका 0.8 दे देगा, -0.8 del O दे देगा ये। ठीक है, बट विल इट गिव दिस मच मैग्नेटिक मोमेंट आल्सो, ये कैलकुलेट कीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच विल बी अनपेयर्ड हो जाएंगे, 2 अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो इसमें तो जो म्यू की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2.8। ठीक है, सो दिस कैन नॉट बी। प्रिया एंड हमजा, आपको समझ में आया? यस और नो, टेल मी गाइस। यस, ओके। D2 कॉन्फ़िगरेशन में ये 2 हो जाएगा एंड दिस EG इज गोइंग टू बी 0 बिकॉज़ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी इन द T2G लेवल। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 into -0.4, तो आपको क्या मिल जाएगा, 0.8 मिल जाएगा, बट म्यू क्या मिलेगा आपको, म्यू मिलेगा आपको 2 into म्यू की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, 2 into √2। 2 √2 वैल्यू क्या आएगी, क्या वैल्यू, 2.8 है ना, तो 3.87 नहीं आता। देन ट्राई सिमिलरली हियर, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, क्रोमियम में 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव इज गोइंग टू हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, क्रोमियम इज 24 ना, क्रोमियम होता है 24। आप निकाल दीजिए 3 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो हो जाएगा D3 कॉन्फ़िगरेशन। तो D3 कॉन्फ़िगरेशन तो इसी, आई मीन D3 कॉन्फ़िगरेशन विल नॉट बी फिट इन द डेल्टा नॉट वाला ही वैल्यू, राइट? सो 3 into 0.4 विल बी इक्वल टू -1.8, सो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। मूविंग टू Mn4 पॉजिटिव। अच्छा, Mn4 पॉजिटिव, Mn होता है आपके पास 25,
5 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालिए आप कहाँ से, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे कहाँ से, फ्रॉम दी s ऑर्बिटल एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, d3 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। दी ओनली ऑप्शन दैट इज रिमेनिंग इज कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। कोबाल्ट होता है आपके पास 27, 27 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, आपके पास बचेगा d7 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए एक्वा क्या है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में क्या होगा, एक्वा कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में एक्वा होगा वीक फील्ड लिगेंड। नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू प्लग इन द इलेक्ट्रॉन्स हियर, तो यहाँ पे आपको इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1 2 3, पेयरिंग कराइए, नहीं पेयरिंग नहीं होगी ना, सॉरी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, CFSC निकालिए, -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर इज 3 और 2 5, 5 है ना, 5 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द EG is 0.6 इंटू 2, तो 5 4 से 20 20, लेकिन क्या हो जाएगा ये -2 हो जाएगा ना, -2, और ये क्या हो जाएगा 6 2 से 12, दैट इज +1.2, इसको आप -2 एंड 1.2 विल गिव यू -0.8 डालो, तो दैट इज राइट। अब इन्होंने पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलेगा, डी आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स विच आर अनपेड, so mu will be equal to 3 into 3 plus 2, that is equal to 5, so 5 3 is 15, √15। ठीक है, अच्छा √16 कितना होता है, √16 is equal to 4, तो 15 क्या होगा, 3.87 के करीब होगा, 4 से थोड़ा कम, ये सोनो प्लीज टेल मी गाइस, करेक्ट है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस फॉर्मूले को लिख लीजिए आप लोग, ये फॉर्मूला आपके ऐसे इसमें नहीं है, CBSE में नहीं है। अभी जैसे हम लोगों ने, अच्छा प्लीज राइट दिस डाउन, लेट मी नो वंस यू डन। Let me know once you're done, guys. Thanks. जी लिखिए गाइस, yes or no, please tell me. Yes, sir. Done. Done. Okay. तो अभी जो हमने प्रूशियन ब्लू कलर पढ़ा था, इसलिए इसमें एक सवाल है, पोटेशियम फेरोसाइनेट सॉल्यूशन गिव्स अ प्रूशियन ब्लू कलर व्हेन एडेड टू, सबसे पहले देखिए ये कोबाल्ट वाले ऑप्शन तो सही नहीं होंगे। ठीक है, आपको क्या चाहिए, Fe चाहिए, कौन से इसमें Fe3 पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, Fe3 पॉजिटिव कहाँ मिलेगा आपको, डी में मिलेगा, FeCl3 में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे Fe इज इन +2 स्टेट, हियर Fe इज इन +3 स्टेट। ठीक है, तो पोटेशियम फेरोसाइनेट में आपको क्या डालना रहेगा, Fe3 पॉजिटिव डालना, रादर Fe3 पॉजिटिव पोटेशियम इसमें डालिए। ओके, सो Fe3 पॉजिटिव शुड बी देयर।
Indicate the complex or the complex ion which did not show any geometrical isomerism. Okay, Marita. GI के केस में एक चीज आपको याद रखनी जो कि आई थिंक दैट इज प्रेजेंट इन द नोट आल्सो, इफ द ligands आर at 180 डिग्री, ठीक है, सेम ligands है ना, सेम ligands इसमें याद रखिए, सेम ligands are at 180 डिग्री, देन एक पेयर भी मिल गया आपको 180 डिग्री के, देन देयर विल बी नो GI इन किस में, इन ऑक्टाहेड्रल में भी हो सकता है और स्क्वायर प्लेनर में भी। GI तो टेट्राहेड्रल में होता ही नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको टेट्राहेड्रल में मिलेगा ही नहीं, बिकॉज देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ एंगल। GI देखिए हमेशा याद रखिएगा, GI कैन ओनली exists only if there are two or more types of angle of bond angle। क्या मतलब है इसका? टेट्राहेड्रल में क्या होता है, टेट्राहेड्रल में वी हैव ओनली वन टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल, दैट इज 109 डिग्रीज, ठीक है, 109.5 109 डिग्रीज है ना, उतना ही होता है, बस एक ही होता है। बट इफ आई लुक एट स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास दो तरह के बॉन्ड्स हैं। वी हैव अ बॉन्ड दैट इज इन 90 डिग्री, देयर इज अ बॉन्ड व्हिच इज इन 180 डिग्री, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, दैट इज व्हाई these bonds are what, इसमें लेकिन आप कहीं पे भी कंपेयर कर लीजिए, इन दोनों के बॉन्ड देख लीजिए, इन दोनों के बॉन्ड देख लीजिए, इन दोनों के बॉन्ड, all the bonds are 109, and this in this case we have 90 and 180 degree। Similarly in the octahedral case also you have, एक तो आपके पास ये हो गया 90 डिग्री वाले, ठीक है, एक ऊपर है एंड दिस इज ऑन दी, दिस आर इन प्लेन, और आपके पास एक हो गया दिस इज 180 डिग्री, ठीक। सो दिस इज आल्सो हैविंग 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, that is why it can show geometrical isomerism। tetrahedral will never show geometrical isomerism because सारे के सारे बॉन्ड सेम होते हैं उसमें वहां पे, तो GI के वहां पे सवाल ही नहीं उठता है। एंड ऑल्सो इफ यू हैव ligands at 180 डिग्री, जैसे ही आपके पास ligands किस में आ जाएंगे 180 डिग्री में, तब क्या होगा आपके पास वहां पे geometrical isomerism शो नहीं होगा, ठीक है। इन दैट केस जो GI will not be present। आप देखिए यहाँ पे, इफ यू हैव Cl2 and En whole twice, ठीक है, तो दो Cl है आपके पास और दो En है, एक केस में Cl क्या रहेंगे, एक दूसरे के 180 डिग्री रहेंगे, और एक केस में सिस और ट्रांस हो जाएगा, सिस एंड ट्रांस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इस केस में तो बनेगा आपके पास, अच्छा यहाँ पे देखिए NH3 है और NO2 होल थ्राइस है, तो A3B3 वाला केस है, इसमें फैक और मर बनते हैं, ठीक है, देयर विल बी अ फैक आइसोमर एंड देयर विल बी अ मर आइसोमर। अब एक केस किस में आता है आपके पास, CONH3 होल 4 Cl2, ठीक है। अच्छा, in this case also what you are going to get, you are going to get cis and trans। एक बार Cl किसके साथ लगा रहेगा, Cl के साथ लगा रहेगा, और एक बार Cl NH4 के साथ लगा रहेगा, राइट। It will be one time opposite to, it will be once opposite to chlorine and one chlorine will be opposite to NH3। तो दो तरह के आपके पास बन जाएंगे, cis और trans को बोल देंगे। बट इस केस में देखिए NC जो है, this particular ligand will always be opposite to CN5, ठीक है, हमेशा किसके अपोजिट रह सकता है, वो CN5 के अपोजिट रह सकता है, उसके अलावा कहीं अपोजिट नहीं रह सकता, ठीक है। दैट इज व्हाट आई कैन से, दिस इज, ये हमने एक चीज कर लिख दी, इसको माजरत चाहते हैं, माय बैड, दिस विल बी फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, है ना। आई थिंक आई सेड दिस रॉन्ग, ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होते बिकॉज वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, माय बैड, ठीक है। अगर 180 डिग्री में हो गए तो ऑप्टिकल आइसोमर्स को प्लीज करेक्ट करके लिख दीजिए, नो ऑप्टिकल आइसोमर्स इन ऑक्टाहेड्रल।
नॉट जीआई। जीआई के बारे में, जीआई के बारे में आपको देखना पड़ेगा अपोजिट किसके। ये सवाल देख लीजिए आप, इससे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। देखिए हम एक चीज आपको बता दे रहे हैं किस तरह से आपको करना है। सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए वेदर इट इज स्क्वायर प्लेनर और नॉट स्क्वायर। अच्छा, ये सवाल काफी आसान हो जाएगा बिकॉज NiCO4 है यहाँ पे। NiCO4 इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिक आइसोमर्स नहीं होते हैं, एंड दैट इज वाई डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं कि सी आंसर होगा। ठीक है, ठीक, चलिए सी आंसर हो जाएगा, उतना आपको निकल जाएगा बिकॉज दिस इज टेट्राहेड्रल। NiCO4 टेट्राहेड्रल होता है। तो अब जीरो तो कहीं है नहीं, जीरो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आप मान दीजिएगा, बट स्टिल PtCl2 NH3 होल ट्वाइस है। ठीक है, तो हाउ यू आर गोइंग टू सी कितने आइसोमर्स होंगे यहाँ पे। आप ले लीजिए क्लोरीन है, एंड क्लोरीन के अगेंस्ट क्या आएगा NH, एक बार क्लोरीन ले लीजिए, और एक बार क्लोरीन के अगेंस्ट क्या आ जाएगा NH3 आ जाएगा। एक आपके पास आइसोमर बनेगा which will have chlorine opposite to chlorine और NH3 opposite to NH3, और दूसरा सेट क्या बनेगा आपके पास, एक बनेगा जब आपके पास क्लोरीन अपोजिट हो NH3 के, और दूसरा क्लोरीन भी किसके अपोजिट हो NH3 के। सो दिस इज गोइंग टू बी ट्रांस हो जाएगा ये, बिकॉज क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट है, एंड दिस इज गोइंग टू बी सिस। ठीक है, तो ये दो आइसोमर बन जाएंगे फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट केस में आपके पास कितने होंगे, दो हो गए। सिमिलरली यू हैव RuH2O होल थ्राइस एंड Cl3, दिस इज अगेन गोइंग टू शो 2 व्हिच इज फैक एंड मर। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आपके उससे सेंट्रांस बन जाएगा। RU वाला देख लीजिए, RU के केस में एक आप बना लीजिए इस तरह से H2O एंड H2O। ठीक है, एंड देन वी हैव क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन। हो गया। अब दूसरा एक, नाउ इन दिस केस ऑल द क्लोरीन्स आर अपोजिट टू व्हाट, ऑल द क्लोरीन्स आर अपोजिट टू H2O। एक ऐसा केस बना दीजिए आप जहां पे क्लोरीन किसके अपोजिट हो गया, क्लोरीन के, एक H2O आपने अपोजिट कर दिया किसके, दूसरे H2O के। ठीक है, अब बचा क्या, एक H2O एंड दूसरा क्लोरीन। ठीक है, तो नाउ दिस आर द टू आइसोमर्स जो आपके पास होंगे, these are the two isomers जो आपके पास होंगे। ठीक है, एंड सिंस दिस इज मेकिंग वन फेस, ऊपर वाला फेस बनाते हैं और ये नीचे वाला फेस बनाते हैं, उनको फैक बोलते हैं, उनको मर बोलते हैं। ठीक है, तो मेक टू। अब COCl2 NH3 होल 4 देख लीजिए, COCl2 NH3 होल 4 में एक बार क्लोरीन के अगेंस्ट क्लोरीन रख दिया आपने, और बाकी जगह क्या आ गया, NH3 आ गया, NH3 आ गया, NH3 आ गया, और यहाँ पे भी NH3 आ गया। एंड इन अनदर केस व्हाट यू कैन डू, क्लोरीन के अपोजिट आप क्या रख दीजिएगा, NH, यहाँ पे क्लोरीन के अगेंस्ट क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन के अगेंस्ट आप क्या रख दीजिए, NH3 रख दीजिए, एंड देन फिल द रिमेनिंग थिंग, है ना। अब रिमेनिंग में कोई हर्ज नहीं है, आपके पास बचे 3 NH3, तो NH3 wait, one more NH3 will be there, right? ये हो गया क्लोरीन और ये हो गया NH3, so this will be trans and this will be cis। ठीक है, एक और सवाल है, दिस इज ऑन स्टेबिलिटी। इसको कीजिए, which one of the following metal complex are most stable? Yes, Marita, very good, correct. Now, if you inherently look at the bonds here, तो यहाँ पे आपके पास the only examples are of the ligand is En or the ligand is NH3। ठीक है, तो क्या दोनों में फर्क क्या है? If I look at pure, just if I'm just looking at the bond, purely at bond, then दोनों में कोई फर्क नहीं है, because what is ethylene diamine? Ethylene diamine is having 2 carbon. Here you have nitrogen atom, and here you have nitrogen atom with 2 hydrogens. And here also with 2 hydrogens.
So the metal is having a bond between what? Nitrogen and metal. ठीक है, नाइट्रोजन और मेटल के बीच में बॉन्ड है. एंड सिमिलरली NH3 में भी क्या होता है? NH3 इज आल्सो हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन व्हिच इज मेकिंग बॉन्ड विद मेटल एटम. तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन मेटल के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन और मेटल के बीच में बॉन्ड. But the difference arises if I look at the structure. That is, this is a chelating ligand which makes a ring. That means if I break one of the bonds, still NH3 is going to be in the vicinity of the metal, and it is very easy to form. It is very easy to reform the bond. But if I break this bond, NH3, अब NH3 को यहाँ metal के पास रोकने के लिए कोई नहीं है, right? It is not indirectly bonded to the metal atom. That is why this NH3 can leave off very easily, and that is why chelating ligands form more stable complexes. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? चिलेटिंग लिगेंड यहाँ पे आपके पास एक EN तो 1 रिंग, यहाँ पे आपके पास कितने रिंग हो जाएंगे? 3 रिंग हो जाएंगे, यहाँ पे 2 रिंग हो जाएंगे, और यहाँ पे 0 रिंग हो जाएंगे. That is why this 3 ring one is the correct option. जैसे ये सवाल है, ठीक है ना? Which one of the following species responds to external magnetic field? बताइए क्या पूछना चाह रहा है ये? Response to external magnetic field का क्या मतलब हुआ? Paramagnetism. सॉरी, जोर से बोलिए मरिता. So paramagnetism. हाँ, very good. Which one of क्या पूछ रहे? Which one of the following species is paramagnetic? क्योंकि पैरामैग्नेटिक क्या होता है? इट रिस्पॉन्ड्स टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्ट होता है, और डायमैग्नेटिक नहीं. ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं? कौन सा पैरामैग्नेटिक है यहाँ पे बताइए? यस मरिता, करेक्ट. ये तुक्के से भी आपका सही हो जाएगा. ना, पैरामैग्नेटिक कैन ओनली बी प्रेजेंट व्हेन यू हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हो सकते हैं? ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेजरली स्पीकिंग चांसेस तब है जब आपके पास क्या हो? मोस्ट ऑफ द वीक फील्ड लिगेंड में क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि पेयरिंग नहीं कराता हो. तो वीक फील्ड लिगेंड यहाँ पे आपको H2 दिख रहा है, बाकी तो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो आप ए मार सकते हैं आंसर सीधा सीधा. ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वीक फील्ड लिगेंड है तो. अब मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है कहीं पे, है ना, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जितनी भी कोशिश कर ले, एक इलेक्ट्रॉन तो बच ही जाएगा ना, तो इट विल बी पैरामैग्नेटिक स्टिल. ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा, बट इट इज या उसमें क्या होती है? द स्पिन इज लो देयर, है ना, तो दैट इज व्हाई वी कॉल देम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. अच्छा, Fe H2O होल 6 में क्या है? Fe3 पॉजिटिव में है. Fe इज इन 3 पॉजिटिव स्टेट. 3 पॉजिटिव हो गया, दैट मींस 26 है. आर्गन 3d5 बचा. d5, and in this d5 what you will be having? You will be having all the unpaired electrons. पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अनपेयर्ड होंगे, बिकॉज वीक है. ठीक, दिस इज d5, so this is going to be paramagnetic. अच्छा, अगर हम NiCN4 की बात करें, so this is going to be 3d8. ठीक है, Ni यहाँ पे 2 पॉजिटिव में होगा. निकल हैज 28. 28 में से 2 निकाल दीजिए तो बचा क्या आपके पास? d8. d8 में Cn, which is a what? Which is a strong field ligand. That is why pairing will happen. And since it is what? Even number, तो pairing, complete pairing हो जाएगी. There will be 0 unpaired electron. अच्छा, अब देखिए आप कोबाल्ट यहाँ पे क्या है? कोबाल्ट इज इन 3+ स्टेट. कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? शक्ति विक्रमन फेंको नहीं, फेंको 27 होता है, राइट? कोबाल्ट इज 27. 27 में से आप कितना निकाल दीजिए? 3 निकाल दीजिए. 2 यहाँ से निकल गया, एक आप 7 में से निकालिए. यू विल गेट हाउ मच? यू आर गोइंग टू गेट 27 में से 3 निकल गया तो 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे. तो d6 अगेन इवन नंबर, कंप्लीट पेयरिंग हो जाएगी, है ना, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. नेक्स्ट वी हैव NiCO4. Ni में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हियर वी हैव 28.
28 में से ये 2 जो है वो d इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट हो जाता है, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी हैविंग d10 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निकल CO4 में कितना क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है आपके पास, d का 10 हो जाता, तभी आपके पास sp3 जो है 4s2, the 4s2 electron it shifts to the 3d structure। 3d में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पेयरिंग के बाद इस तरह से फिल होता है, एंड देन द 4s2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है, these two electron it gets demoted here, एंड यहाँ से फिर sp3 बनता है। ठीक है, तो d10 कॉन्फ़िगरेशन में पेयरिंग हो गई, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नॉट, ये भी इस वजह से पैरामैग्नेटिक नहीं है। ठीक है, so I hope I have taken most of the questions by now। ये छोटा सा सवाल एक लेके चलते हैं, एंड देन वी विल एंड द क्लास। ठीक है, write this last question। Yes, Priya, very good, correct। ए में ही आपको आंसर मिल जाना है, बिकॉज ए में 1 3 2 एंड 4 है। ठीक है, तो आपको कोई और देखने की जरूरत नहीं, ए अगर आपको पता है तो फिर आपको आगे देखने की जरूरत है, अगर नहीं पता फिर आगे देखना पड़ेगा। यस, हमजा एंड मरिता, वेरी गुड, करेक्ट। सीधी सीधी बात है, व्हेन यू हैव टू कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस इस तरह से, इनको क्या बोलते हैं, दीज आर इन दी कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, ए का 3, बी में ही है बस। बाकी NO2 कैन बी NO2 और ONO, पानी जहाँ पे आ गया वहाँ पे सॉल्वेट आइसोमर आ जाएगा, एंड वी हैव सीन दिस एग्जांपल इवन दो नॉट